करोड़ की मंजूरियां हमने हासिल की थी चंद्रायन गुट्टे के लिए, जिसमें एडिशनल पोल्स भी थे, सब स्टेशंस भी थे, नए फीडर्स के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो वैसी पड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी गौर किया जाएगा। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, छोटी बात है जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद छोटी बातें करते हुए बड़ी शर्म आती है, लेकिन अफसोस के करना पड़ता है कि पुराने शहर में हम से यूजी केबल, बंच केबल के लिए भी दरखास्त देते हैं तो वो केबल भी नहीं दिया जाता है। ट्रांसफार्मर एडिशनल होना है पुराने शहर में, पावर कट्स नहीं होंगे रियासत में, लेकिन पुराने शहर में बहुत मर्तबा पावर कट्स होते हैं और पावर कट्स की वजह यही है कि ट्रांसफार्मर्स पर लोड ज्यादा है और ट्रांसफार्मर्स की जो कैपेसिटी है 100 की है तो उसको बढ़ाना है, अगर 200 चेंज की है तो उसको बढ़ाना है। ये छोटे मोटे काम हुए नहीं, जिसकी वजह से। एंड वन मोर थिंग सर, एफओसीज है। एफओसी मतलब सेंटर्स होते हैं जो जाते हैं, अटेंड करते हैं। वी वर रिक्वेस्टिंग फॉर मोर एफओसीज टू बी एडेड ऑन इन ओल्ड सिटी, बट दैट आल्सो हैज नॉट बीन एड्रेस सर। आई होप दैट दिस गवर्नमेंट वुड एड्रेस आवर प्रॉब्लम सर। एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में एक एरिया है जिसको सप्लाई सिटी से नहीं आती है, इसको सप्लाई आती है तो गगन पहाड़ से, महेश्वरम से या कांटेदन से आती है। तो हमने बार बार मुतालबा किया कि सिटी लिमिट्स में इसको लाइए, लेकिन उसको नहीं लाया गया। 180 स्क्वायर mm केबल के लिए भी हमने दरखास्त की, लेकिन नहीं हुआ। मैं आपके जरिए हुकूमत से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि पुराने शहर में बहुत जगहों पे तार लटक रहे हैं और लटकते हुए तारों को ऊंचा करने के लिए एक 500 पोल्स की जरूरत है पूरे पुराने शहर में। अगर आप मंजूरी देते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा। नए ट्रांसफार्मर्स होना है और बहुत सारी जगहों पर 3 फेज नहीं है ओल्ड सिटी में, 3 फेज के लिए हम बोल रहे हैं, थर्ड फेज देना है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी मंजूरी देंगे। बोलिए, प्लीज टेक द माइक, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। Akbaruddin sir. For the last 10 years, he's the senior most legislator here, but he's telling that so many 500 polls he required. He never bothered to ask the previous government why he has done. He's giving the lecture so many times as if he is the master voice. Then why he has not asked all those? Yes, 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Please. Akbaruddin sir. ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, I will mention on the 10 years achievements of Old City. For your kind information, in Old City, we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. And that information was laid on the table. And if you have to calculate, the works which are sanctioned is more than 25,000 crores. As far as this electricity is concerned, we were successful in getting a sanction of many electrical substations. You mean to say कि I shouldn't say, आपको जरा अक्ल होनी चाहिए कि कोई वायर डालते हैं सर, like I want to give an example कि a wire is being given sir, Please. It takes sir every 5 years it is required to replace those wires. So I will have to, as a public representative, I'll have to make my demand. I'll have to put across. That doesn't mean that I'm going to be quiet. Sir, it is the government, and a government is a continuous process. So I am going to make a demand, I am going to make a request, I am going to ask. You want to give or you don't want to give, it is your prerogative. But my responsibility is to demand, to make a request to the government. Government has the responsibility to take care of everybody. And I am making this demand on the assurance given by the Honorable Chief Minister that he is not going to take any, पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे बोले आप,
कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। सर, आई हैव टू रिप्लाई टू दिस सर। सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को तो हिंदुस्तान भर में इख्तिदार है और मौका है। 16 चीफ मिनिस्टर आए रियासत तेलंगाना में, 119 सीट हैं, हिंदुस्तान के 500 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, रियासतें हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि मुसलमानों की एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसको खत्म कर दो। उनका मकसद है कि रियासत में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं। हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या ये मेरा हक नहीं है? I request my learned friend अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, you know, हमारा जो एमएलए साहब बात करे, he was just asking, basically the demand is there. He was just telling about the inefficiency of the TRS government, which they didn't do. He was not criticizing the MIM and all. No. Ek minute. No. He didn't. He didn't say failed. Mr. Gentleman, I would like to say I haven't failed. No. Akbar bhai. No. He was. No. No. Sir. नहीं अरे एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको साहब। स्पीकर सर, ओवैसी साहब, प्लीज। No, if any member diverts, sir, gets diverted, basically, you know, it's only all the emotional issues which comes into being. So our member was just asking and questioning the TRS government, which they didn't do it. This is his context and this is his objective. It would have gone in, it would have taken in a wrong way. And I would like to request Honorable Speaker to expunge the words what Akbaruddin Owaisi has said about the new member. What the new member, like Akal ka kuch ऐसा नहीं ठीक है भाई। No, I'm not. We are not here. We are here on a positive note. Sir, what? Please. Sir, my point here is, you know, he has seen many assemblies. No, that's fine. You know, we take everything in a very positive way. खबरदार in Urdu बोले तो, कवर बोले तो न्यूज information. खबरदार is nothing which is unparliamentary. KTR garu, please. Sir, you know, whatever you please examine the record, sir. Please examine the records. Whatever is unparliamentary, you can expunge it, sir. Sir, I request the honorable member also, please. He is a new member. He is a new member of the assembly. No. नहीं किससे भी मैं सर डराना हमारा फर्ज बनता नहीं होता साहब। We are all the new members, sir. There are 51 new members in the assembly, sir. Please. Sir, देखिए सर एक there are 51. Please. मिनिस्टर का बात हो गया, बात आपको देंगे, प्लीज। There are 51 new honorable members in this assembly, sir. 57. So we have to respect each and every honorable member, even though they got elected for first time or 2 times or 3 times or 4 times. My request to honorable member is, don't get into the total intricacies what they speak. They have just come to assembly, they were trying to express their opinions, try to understand it on the broader thing. You know, you have to accommodate everybody and try to go along with it. రికార్డును పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటాను। అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ సాబ్ సబ్జెక్ట్ पर मैं सब्जेक्ट पर ही छू सर, बट बिफोर गोइंग ऑन द सब्जेक्ट सर, फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ द वर्क which was questioned, and after that I'll come on my subject, sir.
प्लीज 1,835 lakhs, sir, and this is for the financial year 21-22. और बोलो, sir. देख, honorable speaker, sir. No, sir, wait, sir. Please wait, sir. I am not yielding, sir. मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मर्तबा जीत कर आया हूं, और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां हैं वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे किया, और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। लेट मी मेक इट वन मोर थिंग क्लियर, सर. आई हैव कम with a majority of 81,000 change votes, and I have secured 67,000 poll votes. मतलब ये कि आवाम का भरोसा हमारे साथ है। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद, तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे, हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मर्तबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं, हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो, हमारे हाथ दराज हैं। हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं, हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं है। हम तैयार नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि इख्तिदार है तो हम डर जाएंगे और उठकर हमको डिस्टर्ब करेंगे। नहीं, मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह आवाज पूरे वो ताप के साथ थी और वो ताप के साथ ही रहेगी। हम मसाइल के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी थी। हमारी जिद्दोजहद, आई एम कंक्लूडिंग सर, हमारी जिद्दोजहद किरण कुमार रेड्डी के दौर में। सीएम साहब बात करें। स्पीकर सर, एक नया मेंबर, नहीं स्पीकर सर, एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले प्लीज 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 गिव मी, नो 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 मिस्टर प्लीज, मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी, no definitely you will get mic, you can, no definitely you will get mic, you can put your argument. I'm not going to, no speaker sir, अकबरुद्दीन ओवैसी जी जितने बार बोले, जितने मिनट बोले, हम कुछ नहीं कहा, मगर ये कोई तरीका नहीं है। स्पीकर सर, असद साहब, अकबर साहब, स्पीकर सर, बैठिए, आपको माइक देता हूं। स्पीकर सर, बैठिए। इतना नहीं सर, स्पीकर सर, अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको, वो पार्टी को, माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 minute, yes, because of your seniority, this is not any out of turn quota. We have respected your seniority and your experience. That is what I wanted to clarify. At the same time, he has to respect colleague member. He is also, no, seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member,
हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहां पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहां पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। और तीसरी बात स्पीकर सर, आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स। जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले। आप माइक दिए, साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर, ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए, तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा। साहब इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते। मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात करा, आप हाउस को आगे में रखो सर, आप बैठिए, आप हाउस को आगे में रखो सर, बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर मैं देता हूँ, अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप।
स्पीकर आप सर, बैठिए। स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने कौशिक गारू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दिपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गजवाल डिवीजन 50.29 ट्रांसमिशन लॉसेस। స్పీకర్ సార్, కౌశిక్ గారు మీరు విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు హరీష్ రావు గారు బాధ్యత వహిస్తున్న సిద్దిపేటలో 61.37% అధ్యక్ష, గజ్వెల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న శాసనసభ నియోజకవర్గంలో 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। ఇప్పటి వరకు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో హైదరాబాద్ సౌత్ నుంచి 43% ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్, ఈ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా విద్యుత్ వినియోగం చేసే దాంట్లో బిల్లులు ఎగవేసిన దాంట్లో మొదటి స్థానం సిద్దిపేట ఉంది, రెండవ స్థానంలో గజ్వేల్ ఉంది, మూడవ స్థానంలో హైదరాబాద్ సౌత్ ఉంది। ఈ ముగ్గురు లీడర్లే 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించక మొండి బకాయిలల్లా సిద్దిపేట, గజ్వేల్, హైదరాబాద్ సౌత్ ఉన్నది అధ్యక్ష। ఈ రోజు మొత్తం విద్యుత్ రంగమే దివాలా తీయడానికి, అప్పుల పాలు కావడానికి ఈ 3 ప్రాంతాల నుంచి బిల్లులు చెల్లించకపోవడం వల్ల ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి దాపురించింది। నేను ఇప్పుడు మీ ద్వారా సభ్యులను నేను అడుగుతున్నా అధ్యక్ష, ఇన్ని పెండింగ్ బకాయిలు ఉన్నాయి, ఇంత బాధ్యతతో మాట్లాడినా, ఇంత డేటా తీసుకొని మాట్లాడినా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఎస్ మా ప్రాంతాల నుంచి బిల్లు చెల్లింపులో బకాయిలు ఉన్నాయి, నేను హరీష్ రావు గారు అదేవిధంగా చంద్రశేఖరరావు గారు బాధ్యత తీసుకొని ఈ బిల్లులు చెల్లిస్తామని ఎందుకు ముందుకు రాలేదు సార్? ఇది పద్ధతే సార్? అదేవిధంగా స్పీకర్ సార్, ఇన్ని విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అంతకంటే ముందు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా విద్యుత్ కోతలు ఉన్నాయా, ఏ రైతులైనా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేసిండ్రా, ఏ రైతులైనా విద్యుత్ రావడం లేదని అడిగినరా అని చెప్పి మాజీ మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినరు। వారి సమాచారం కోసం నేను చెప్తున్నా స్పీకర్ సార్, కామారెడ్డి ఎక్కడి నుంచి అయితే కేసీఆర్ గారు గెలవాలని వెళ్ళిపోయి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిండో ఆ కామారెడ్డిలో సెప్టెంబర్ 1 తారీఖు నాడు కరెంటు సబ్ స్టేషన్లో ముట్టడి చేసి మొత్తం రైతులు ధర్నా చేసి రోడ్లెక్కి కామారెడ్డిలో నిరసన తెలిపినరు। 24 గంటలు కాదు కదా, 10 గంటల విద్యుత్తు కూడా ఇవ్వడం లేదని కామారెడ్డి శాసనసభలో ఆ నియోజకవర్గంలో కామారెడ్డి జిల్లా బాగర్తిపల్లి సబ్ స్టేషన్ ఎదుట ఆందోళన చేస్తున్న రైతులు, వేములనర్వ శివారులో ఎండిపోయిన మొక్కజొన్న పంటను మేస్తున్న గొర్రెలు, ఇది సమాచారం అధ్యక్ష। ఒకవేళ కామారెడ్డి కేసీఆర్ ఇలాకా కాబట్టి నాకు సంబంధం లేదని మాజీ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారు మాట్లాడొచ్చు। ఇక్కడ సూర్యాపేట జిల్లా నేరేడుచెర్ల దగ్గర రాస్తారోకో చేస్తున్నారు। నేరేడుచెర్ల గరిడేపల్లిలో వారి సొంత జిల్లా రైతులు రోడ్డెక్కి రాస్తారోకో చేసిన వివరాలు అధ్యక్ష। అదేవిధంగా గరిడేపల్లి కల్మల చెరువు సబ్ స్టేషన్ ను ముట్టడి చేసి రైతులు ధర్నా చేస్తున్నారు అధ్యక్ష। అదేవిధంగా మేళ్ల చెరువు అక్టోబర్ 15 నాడు సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్ల చెరువులో రైతులు నిరసన బాట పట్టారు అధ్యక్ష। అదేవిధంగా కరెంటు సమస్యలతో గద్వాల్లో 24 గంటల కరెంటు రావట్లేదని సబ్ స్టేషన్ ముట్టడి చేసిన వివరాలు అధ్యక్ష। అదేవిధంగా అధ్యక్ష, కరెంటు కోతల వల్ల కన్న కొడుకు చచ్చిపోతే కరెంటు కోతతో కొడుకు, కడుపు కోతతో తల్లి బలి,
కరెంటు సరైన సమయంలో ఇవ్వకపోవడం వల్ల కొడుకు చనిపోతే ఆ దుఃఖాన్ని భరించలేక కొద్ది గంటల్లోనే కొడుకు శవాన్ని కూడా దాన సంస్కారాలు చేయకముందే ఆ తల్లి, కొడుకు పేరు కొమరయ్య, తల్లి పేరు ముత్తవ్వ, డోర్నకల్ వరంగల్ ప్రాంతంలో 2 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం కలిసి రావడం లేదని అప్పులు పెరిగిపోయాయి. వాటిని తీర్చేందుకు కొమరయ్య సాగును పెంచాడు. కానీ విద్యుత్ రాకపోవడం వల్ల కొమరయ్య అనే రైతు చచ్చిపోతే ఆ దుఃఖాన్ని తట్టుకోలేక గుండె బగిలి కన్న తల్లి ముత్తవ్వ కూడా చనిపోయింది అధ్యక్ష. ఇదే కాదు అధ్యక్ష, ఇంత ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చదివిండు కదా మా మిత్రుడు. నేను అడగదలుచుకున్నా, ఎందుకంటే వారు చాలా సీనియర్ సభ్యులు, వారు అన్ని విషయాలను వారు సభ ముందుకు తెస్తే నిజంగా మేము అప్రిషియేట్ చేస్తాం అధ్యక్ష. మేము వైట్ పేపర్ పెట్టింది దేనికోసం అధ్యక్ష? వాస్తవాలను ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని ఒక మంచి పరిపాలన ఇవ్వాలని మేము చర్చ చేసినాం అధ్యక్ష. ఇంత చర్చ జరిగినా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు శ్రీశైలం ఎడవగట్టు కాల్వ 1988-89లో ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 89లో ప్రారంభించింది, 2001లో పూర్తయింది. 20 సంవత్సరాల నుంచి శ్రీశైలం ఎడవగట్టు కాలువ మీద 900 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తితో నడుస్తున్న ప్రాజెక్టు, నీళ్ల ద్వారా నడిచే ప్రాజెక్ట్ అధ్యక్ష. అక్కడ ఈ ప్రాజెక్టును మేము నిర్మిస్తే నిర్వహణ లోపం వల్ల ఆగస్టు 22, 2020 నాడు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల 2 రోజుల ముందే హెచ్చరించిన ఇక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయి, తక్షణమే అధికారుల నిపుణులను పంపించి ఈ సమస్యల్ని పరిష్కరించండి, లేకపోతే పెను ప్రమాదం జరగబోతుందని అక్కడ అధికారులు ఇక్కడ ఉండే అధికారులకు హెచ్చరిక లెటర్ పంపించిన వారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నిర్లక్ష్యం వల్ల, పట్టించుకోకపోవడం వల్ల శ్రీశైలం విద్యుత్ సొరంగం 900 మెగావాట్లది బ్లాస్ట్ అయి 9 మంది చచ్చిపోయిన అధ్యక్ష. 9 మందిలో ఏఈ ఉజ్మా ఫాతిమా హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఓల్డ్ సిటీలో, ఆ అమ్మాయికి మైనారిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన రిజర్వేషన్తో ఆ అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ చదివి ఉద్యోగం చేసి అక్కడ చేరితే ఆ అమ్మాయి ఒక మహిళ అయి ఉండి, ఆడబిడ్డ అయి ఉండి అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తుంటే ఆ అమ్మాయి చనిపోతే ఆ కుటుంబాన్ని మేము ఇంటికెళ్ళి పరామర్శించినాము, మేము ఆదుకున్నాం ఆ కుటుంబాన్ని. కానీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారుగా ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఆనాటి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి కనీసము మన చాదర్గట్టులో ఉండే ఆ మైనారిటీ ఏఈ కుటుంబాన్ని కూడా పరామర్శించలేదు. శ్రీశైల సొరంగము పేలిపోవడం వల్ల 9 మంది ఉద్యోగస్తులు అక్కడికక్కడనే బుగ్గిపాలైపోయిన శవాన్ని కూడా గుర్తించలేని పరిస్థితిలో ఖాళీ బూడిదై మసైపోయింది. మానవత్వం లేని ప్రభుత్వము దాని మీద విచారణకు ఆదేశించలేదు. కనీసం ప్రమాద స్థలాన్ని మేము పరిశీలించి బాధితులకు కొంత ఉపశమనం కలిగిద్దామంటే మమ్మల్ని పోలీసులను పెట్టి అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లలో కూసబెట్టినారు అధ్యక్ష. ఇన్ని తప్పిదాలు ఎంఐఎం పొత్తులో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆనాడు ప్రభుత్వం నుండి దుర్మార్గాలు చేస్తే ఈ శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ మీద జరిగిన ప్రమాదం గురించి కూడా మా మిత్రుడు ఈ సభలో ప్రస్తావించి ఉంటే ఎస్ డెఫినెట్ గా మేము అప్రిషియేట్ చేసి ఉండేవాళ్ళం. కాబట్టి ఈరోజు లెట్ మీ సో సార్ अकबर साहब नहीं अकबर साहब प्लीज नहीं अकबर साहब आप इतना समझो, ये सरकार जिम्मेदारी से ये व्हाइट पेपर टेबल किए, ये व्हाइट पेपर टेबल करने के बाद आप जो भी सुझाव दे रहे, सुझाव लेने के लिए भी हम तैयार हैं. इसका मतलब ये नहीं जो इल्जाम किए, जो गुनहगार है, आप उनके तारीफ पे तारीफ करते रहा तो यहां बैठकर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है. आप जो ओल्ड सिटी हैदराबाद के लिए या तेलंगाना के लिए डेवलपमेंट करने के लिए क्या फंड चाहिए आप बोलो, हम जिम्मेदारी से हम निभाएंगे. मगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं. आप पुराने दोस्त को, जो बिगड़ा हुआ दोस्त को आप बचाने के लिए जितना आपके शक्ति है सब सारे आप क्यों उनके रक्षा के लिए आ रहे, मेरे समझ में नहीं आया. इसका ये आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या मदद कर रहे हैं? नहीं, अच्छा दोस्त को
स्पीकर सर, अच्छे दोस्त को 10 रुपए देकर साथ में लेना, बुरा दोस्त को 10 रुपए देकर छुड़ा लेना, ऐसे दोस्ती आपको ठीक नहीं है। आप जितना तेलंगाना जनता जिनको तिरस्कार किए वहां पर बिठाए, उनके तरफ आप क्यों वकालत ले रहे? अब रहा अब फाइनल बात है, आप 7 सीट जीते, मगर बहादुरपुरा में कितने वोटों से जीते, नामपल्ली में कितने वोटों से जीते, एक बार ये भी आप हिसाब किताब ले लो। अकबर साहब, हमको कोई एतराज नहीं है, आपके पार्टी जिताने के लिए, आपके पार्टी अगर 9 सीट 10 सीट 12 सीट कुछ भी जीतने के लिए आपका पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मगर माइनॉरिटी का हक बचाने का जिम्मेदारी हमारे है। हर बहुत सारे प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाए, इस देश का राष्ट्रपति माइनॉरिटी को हमने बनाया, आपने नहीं बनाया, आप नहीं बनाया। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में हम लोग मुख्यमंत्री बनाए माइनॉरिटीज को, इस देश का राष्ट्रपति हम ही ने बनाया माइनॉरिटी को। आपके सुझाव से नहीं, हमारे जिम्मेदारी है माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलने का। हम किसी से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। 4% रिजर्वेशन दिया, हमने दिए, 12% वादा किया, धोखा किया उस आदमी से, आप दोस्ती कर रहे, ये ठीक नहीं। आपका मर्जी, आप डिसाइड कर लो किसके साथ में रहना, मोदी के साथ में रहना, मोदी को मदद करने वाले के साथ में रहना, न्यूट्रल रहना, सेक्युलर रहना, आपका मर्जी है, आपका मर्जी को हम कुछ नहीं बोल सकते। मगर कांग्रेस के ऊपर जब इल्जाम लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच कर इल्जाम करो, क्योंकि अब हम लोग స్పీకర్ సార్ నేను ఒకటే మాట చెప్పదలుచుకున్నా, వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు స్వతంత్రమైన రాజకీయ పార్టీ, వాళ్ళు ఎవరితోనైనా పొత్తులు పెట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళు ఎక్కడైనా పోటీ చేయొచ్చు, వాళ్ళు పొత్తులు పెట్టుకునేదాన్ని పోటీ చేసేదాన్ని కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు వ్యతిరేకించదు। మా విధానం మాది, వాళ్ళ విధానం వాళ్ళది। అయితే మైనారిటీ యొక్క వెల్ఫేర్ కావచ్చు, డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉన్నది 100%। ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కమాలుద్దీన్ గారిని పిసిసి అధ్యక్షుడిగా చేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది। ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో హోమ్ మినిస్టర్గా మైనారిటీని పెట్టిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది। కాబట్టి మైనారిటీల విషయంలో కాంగ్రెస్ చిత్తశుద్ధిని ఎవరు శంకించవలసిన పని లేదు। వారు ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎన్నిక వచ్చిందో ఆ ప్రాంతమే కాదు, రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంత అభివృద్ధికి పోయినా వారు మాట్లాడవచ్చు, వారు సూచనలు చేయొచ్చు, వారిని సూచన చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా। కేటీఆర్ గారు, మీరు చాలా సీనియర్ శాసనసభ్యులు, లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ మాట్లాడేటప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు దయచేసి, ప్లీజ్ అక్బరుద్దీన్ సాబ్। Honorable Speaker, sir. Please. Honorable Speaker, sir. मोहतरम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जिस जबान में बात की है, जिस अंदाज में बात की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, इस वजह से कि आज मैंने बीजेपी के एक बड़े लीडर को भी यही बात कहते हुए सुना। नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वह ऐवान में नहीं है, ऐवान के आदाब और रूल्स को मैं जानता हूं। बीजेपी के बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यही बात कही जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कही कि पुराने शहर के लोग बरखी बिल्स बाकी हैं और भरते नहीं हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि यह हाउस की कोई सैंटिटी है या नहीं है सर। अगर है तो इन द सेकेंड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट सेशन ऑफ August, I had raised a question and I had asked कि बार बार बीजेपी से, दूसरों से इल्जाम लगता है कि पुराने शहर में बरखी की चोरी है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट, the government of that day tabled the statement stating that कि पुराने शहर में बरखी की चोरी नहीं है।
अगर तो मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आप बरखी के बकाए जात ड्यूस की बात कर रहे हैं या चोरी की बात कर रहे हैं। मैं देखिए साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप पुराने शहर में बरखी की चोरी है बोल रहे हैं या ड्यूस है बोल रहे हैं? స్పీకర్ సార్, సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను ఒక ఓల్డ్ సిటీ గురించి చెప్పలే. విద్యుత్ బకాయిలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో సిద్దిపేట నెంబర్ 1 మళ్ళీ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. 61.37 గజ్వెల్ డివిజన్లో 50.29, హైదరాబాద్ సౌత్ 43%. ఇవి విద్యుత్ బకాయిలు ఉన్నాయి, బిల్లులు రావడం లేదు. ఈ బిల్లులను చెల్లించిపించే బాధ్యత గజ్వెల్లో కేసీఆర్ గారు, సిద్దిపేటలో హరీష్ రావు గారు, హైదరాబాద్ సౌత్లో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు బాధ్యత తీసుకొని ఈ విద్యుత్ బకాయిలను చెల్లింపజేస్తే ఈ సంస్థ అప్పుల నుంచి బయటపడుతుంది. వారు అది కూడా మాట్లాడి ఈ ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తే బాగుంటుందని నేను చెప్పిన. కాబట్టి వారు ఏదో ఊహించుకొని सर मैं उतना ही बोला ना सर. आप जो क्लैरिफिकेशन पूछे मैं जिम्मेदारी से जवाब दिए. जवाब देना भी कोई गुनाह है क्या? हो गया बस. थैंक यू सर, थैंक यू सर. अकबर साहब, आप बहुत सीनियर 6 टाइम्स एमएलए हैं, लीडर ऑफ द हाउस बात करते जब चेयर से बात करना, आप डायरेक्ट उनको बात करके बिठाना, ये अच्छी बात नहीं है साहब, ये अच्छी बात नहीं है साहब. नहीं सर, if I am using the mic, I know the rule positions. When I am using the mic, everyone who's using the mic is supposed to address to the chair. Now the mic is here, I am addressing it to you, sir. Please. If I have to address without the mic, yes, that is something different, sir. Please. Mic and without the mic is there. सर, थ्रू यू सर. अब क्या नजर पे भी पाबंदी लगाएंगे आप? नजर पे भी पाबंदी, गर्दन पे भी पाबंदी. ऑनरेबल स्पीकर साहब, अब आप देखो साहब. आप सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई जस्ट वांट टू clarify on 3-4 things which Honorable Chief Minister Saab had said, and it is very misleading, sir. Sir, every political party has the right to contest elections wherever they want. He says that MIM didn't allow Shabbir Ali to win. Did MIM contest in Nizamabad? Sir, and second thing about Jubilee Hills. Sir, Jubilee Hills, we have corporators there. And we have earlier also contested. This time also we contested. You mean, and one more thing, sir. When I do not have any objection when a Congress candidate is contesting against me, and rest of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए. What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है. अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं, आप वहां से नहीं लड़ना. सर, आई एम नॉट अ माइनॉरिटी सेल ऑफ एनी पार्टी. आई एम अ Majlis Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? स्पीकर सर, प्लीज. अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर मुद्दे को दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. मैं बोला, मैं जिम्मेदारी से आप जो सवाल किए वो सवाल को मैं फिर जवाब देना पड़ रहा. 2014 में जुबली हिल्स से एमआईएम चुनाव लड़ा था जब नवीन यादव को टिकट दिए थे. 2018 में
एमआईएम जुबली से चुनाव नहीं लड़ा, वही नवीन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो पार्टी से बर्खास्त कर दी। अभी 2023 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए। मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा, जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए। इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिल्ला भी है, दो बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी। तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर, इतना ही है। अकबर साहब, Sir, my humble request to you is that, sir, let me complete what I have to say, sir. Sir, let me just complete what I have to say, sir. Please. Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person, and Almighty has blessed him with such a big chair, in spite of having a political career, started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. He should be more matured, because he's gone everywhere, here and there, and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is no, sir. Let me complete, sir. Sir, it is. Sir, I request. सीएम गारू, एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग नादेंद्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए। नादेंद्र भास्कर राव से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्कर राव तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है। अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है। यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के आए, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो। अगर एक दिन चर्चा करना है केसीआर साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में टीडीपी में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर बीजेपी से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहां घूम के आए, सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है। अगर आप कभी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे। स्पीकर सर, नहीं अब तो पावर के बाद सब्जेक्ट अब अध्यक्ष प्लीज डिप्टी सीएम है ना, प्लीज
please, just let me appeal to the House. Let me appeal to the House. He'll give me the mic, please. He will give you the mic. Let me appeal to the House. Even My mic would be not snatched away again, sir. Sir, Honorable Leader of the House and Honorable Chief Minister Saab has said that MIM was with N.T. Rama Rao, MIM was with Chandrababu Naidu. Sir, that's what I'm saying, sir. Sir, we have been only for the sake of upliftment of the state. We have always played a role of constructive opposition, sir. And we will continue to play that, sir. और हम हमारे मसाइल के लिए जिद्दोजहद करें. अगर नाडेनला भास्कर राव साहब की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमने मुसलमानों के लिए आर्टिकल 30A के तहत एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्टिकल 31A के तहत लिया हमने. मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इस वजह से कि मुसलमान तालीम में पसमानदा थे और उसके बाद में रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि एक मुसलमान को हराने के लिए जुबली हिल्स गए, इससे पहले नहीं लड़े थे. सर, I would like to, through you, tell the Honorable Chief Minister Saab that he is now an MLA. In last parliament, he contested for Malkajgiri. So if he doesn't contest this time, so if he again goes to Malkajgiri after next 5 years, तो shall I stand and say कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के? ये कैसी बात है साहब ये? और सर एवरी देखिए साहब, सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है. जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है. और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे. हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर, हम मर जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे. हम मरते मर जाएंगे मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है. और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं. चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई. चलिए मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे. मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही, कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं. ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े, अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर, हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे को लड़ना. अकबर भाई ये चैलेंज करने का, हेलो अकबर साहब, नहीं माइक दे रहा हूँ, आप जाइए, माइक दे रहा हूँ. बिल्कुल नहीं, माइक प्लीज कम, माइक दे रहा हूँ, आप जाइए, प्लीज कम. ये क्या चैलेंज है, ये क्या चैलेंज है अकबर भाई, चैलेंज क्या है, ये क्या चैलेंज है? प्लीज सिट डाउन. अरे यार दे रहा हूँ, प्लीज कम. आपको दे रहा हूँ, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, माइक दे रहा हूँ. आप जो बात कर रहे हो करेक्ट नहीं. चैलेंज क्या है भाई, सीट के ऊपर जाइए. चैलेंज क्या है, क्या चैलेंज है? हेलमेट है तो नहीं दे दूं मैं. चैलेंज क्या है भाई, ये गलत है चैलेंज करना. यार अकबर साहब को दे, स्टार्ट करो. अब बैठिए, अकबर साहब को दे रहा हूं मैं, आप जाइए, दे रहा हूं. विल में आप रहे तो मैं नहीं दे सकता हूं, आप जाइए. अकबर साहब नहीं धमकी नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं. अकबर साहब, Honorable Speaker, sir. सब्जेक्ट का ऊपर बात करिए. No, sir, I have to give a clarification, sir. Sir, it's a very big allegation which he said
कि we didn't allow Azharuddin to win. सर मैं भी ये बोलना चाह रहा हूं, देयर इज एन हिस्ट्री. बाबा साहब अंबेडकर एक दलित थे और उस बाबा साहब अंबेडकर दलित को नहीं जीतने कौन दिए? कौन? सर ये बोलो सर, कौन? 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 दिस इज अनफेयर सर, दिस इज अनफेयर. नो सर, आप डाइवर्ट कर रहे हैं. नहीं हो सकता साहब. ये दिस इज सर, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर, सीनियर मेंबर. Now it's a high time why we have to stand up. We have to stand up before all the 57 new members and show our eminence. Please try to understand. We are on the serious subject on the state finances. If I request honorable member, because the TRS doesn't have any reply on this, so they just want to sidetrack the issue. Please understand, Akbar bhai. Akbar bhai, if they have the guts, try to speak on the subject. If you have any subject, try to speak on this subject. Don't try to sidetrack the subject, sir. Sir, if there are any unparliamentary votes, either on our treasury benches side or on their side, try to remove or expunge from the record, sir. I request honorable member Akbaruddin Sahab to conclude on the subject. My request to him, sir. Please. Because anyway, TRS is not interested to discuss on this subject. They are running away from this subject and they are trying to instigate the members, sir. Try to understand, sir. प्लीज अकबर साहब, अकबर साहब प्लीज सब्जेक्ट बात करें सब. Sir, Honorable Speaker, sir, I would like to come on record and also clarify on one last thing which is very important. Honorable Chief Minister Saab had said that it was Congress which gave the 4%. Let me remind and correct, that time he was not in Congress. That time he was, I think, I don't know, anyway. Sir, Please. sir, it was Rajshekar Reddy, sir. Sir, I would like to correct the record, sir. Sir, it was Rajshekar Reddy, MIM and Congress both together were successful in getting the 4% reservation, sir. One cannot take this credit. We cannot forget Rajshekar Reddy, sir. And Rajshekar Reddy was a true gentleman, sir. Because of his nature, we were together, sir. And at that time, leaders from Delhi, sir, again I do not want to mention the name, they came and met my late father at my father's residence. My father told, include in your manifesto about reservation to Muslims. Then MIM will come together with you and we will work. Rajshekar Reddy Saab included that in the Congress manifesto in United Andhra Pradesh. After that, together, Rajshekar Reddy and myself, we struggled, sir. We fought for it, and also Muhammad Ali Shabbir was also part of it, sir. So we together got the 4%. Do not say that it is only Congress who got 4%. This is unfair. We were also part of it. And then, Please, sir, please go on subject, please. yes, sir. Please. और उसके Please. बाद में, Please. सर, मैं ये कहना चाहता हूं, बहैसियत एक रुकने असेंबली, क्या मैं अपने चीफ मिनिस्टर के सामने अपने मसाइल को नहीं रख सकता? क्या मैं एक रुकने असेंबली की हैसियत से मेरे पुराने शहर में या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी चीज की जरूरत है तो क्या नहीं बोल सकता? क्या नहीं बोलना चाहिए? तो आप रिकॉर्ड्स को उठाकर देखिए सर. मैं सिर्फ यही बोला कि ओल्ड सिटी में ये थोड़े काम बाकी है. देयर इज अ कंटिन्यूएशन. गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सर. कि आज अगर 100 करोड़ के काम हुए तो आगे फर्ज करिए उस 100 करोड़ को कंप्लीट करने के लिए एक 10 करोड़ की जरूरत होगी. तो मैं 10 करोड़ के लिए क्या मुतालबा नहीं करूंगा? मैंने आपके सामने कहा कि कितने पोल्स आए, और थोड़े से पोल्स अगर आ जाते हैं तो काम कंप्लीट हो जाएगा. तो क्या ये मेरा गुनाह है? क्या ये मेरी गलती है? डिड आई डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट? I was very much on the subject, sir, and I was just requesting
the leader of the house and the deputy chief minister and the minister for power to kindly look into this leftover issues. If these leftover issues are considered and attended, the project and the work will be completed. तो क्या गलत है? आप बोलिए नहीं बोलना चाहिए? नहीं नहीं अगर नहीं बोलना है और आप बोलिए कि मैं अकबर साहब बोलिए. Sir, honorable speaker, sir, when I spoke, sir, I brought about the issues which were not mentioned in the white paper. I was listening to all the members. I had heard the ex Jagdish Reddy Saab also. I heard BJP members also. I heard many from the treasury benches also. But many issues which I had mentioned today in my speech was not addressed. So did I deviate from the subject? And sir, if I have given the calculations and I had said about the per capita consumption, I had said about the debt, about the loans, sir, it is not my statement. I gathered all that by calculating from the white paper. I don't understand the reason for the treasury benches to get agitated and come to a conclusion as if I am coming for the rescue of BRS. No, sir. I am not coming for rescue of BRS. BRS is capable enough and strong enough to fight its own battle. MIM with the 7 members is capable and strong enough to fight its own battle. BJP with its 8 MLAs is strong enough and capable to fight its own battle. Everybody have the capability. But just saying that you are going for them, no sir. Sir, before concluding, I would request once again to the government, the leftover issues are there about Old City, which I was mentioning, and in that time, I couldn't address because a lot of interruptions had happened, sir. I was talking about FOC. We want few more FOC, sir, in Old City, sir. And also, I was mentioning about Falaknuma substation is there. Kindly make that Falaknuma substation, as it is a substation, make it a division. Like this, upgrade it. And sir, there are many transformers which needs to be upgraded from 100 to more, from 200 to more. Additional load is there. Calculate that. And sir, there is a rule in which each and every section has number of households. In Old City, one section has too many houses. So kindly do the bifurcation and have the equal division and do it in the same way in which you're doing in New City, Secunderabad, High-Tech City. This is what I just wanted to. And also, sir, there is a very big issue about old conductors, sir. The conductors needs to be replaced in Old City. I hope that this will also be addressed, sir. And also, sir, 180 square millimeters cable is required. I hope that this will also be addressed, sir. And recently, sir, in my constituency, आग लग गई थी सर, जिसकी वजह से एक दुकान को नुकसान हुआ था, तो उसको भी. And also, I would also like to say, sir, about there is a problem of low voltage in many areas of Old City still, in spite of having so many sanctions. So I want that also to be addressed, sir. In the last 3-4 months, sir, maintenance work has not been taken up, sir. The AB cables and earthings in South Zone area, they say that there is a shortage and there is no material in the store. I request through you to the Minister Saab to kindly make available of all the equipment that is required, sir. And lastly, sir, Honorable Chief Minister Saab had also said that Akbar Saab didn't tell about the Sri Salem. Sir, it was there in my note. I was about to say, but because of the interruption, we couldn't say. Sir, in the white paper, nothing has been mentioned about Sri Salem के पास भी हमारा जो पावर जनरेशन का जो हिस्सा तेलंगाना को दिया गया था, उसमें आग लगी. सर, व्हाइट पेपर में अब तक नहीं कहा गया कि आग पर काबू कैसे पाया गया, who took the repair work, and has the repair
बीन कंप्लीटेड एज पर माई इंफॉर्मेशन ये रिपेयर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या उसके बारे में भी आप एलैबोरेट करिए, अपना रिप्लाई देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जिन मसाइल को हमने उठाया है, और वो श्री सैलम में एक मुसलमान बच्ची थी एक, और उनके बारे में सीएम साहब ने कहा, मैं आपके जरिए हुकूमत से भी कहूंगा कि उनको भी कुछ इमदाद या कुछ देने के लिए। देखिए, मसाइल तो हम उठाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर मसला हमारा हल हो जाए या हर मुतालबा हमारा कबूल हो जाए। तो हमने मसाइल उठाए जब ये इख्तिदार में थे, बहुत से मसाइल पर इन्होंने तवज्जो दी, सुना, हल किया, बहुत से मसाइल को हल नहीं किया। तो इन्होंने जो नहीं किया, एक उम्मीद के साथ आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप हल करेंगे, इसलिए तो उठा रहे हैं। अगर हम उठा भी नहीं सकेंगे तो फिर अवाम जो हमको यहां भेज रही है उसका क्या मकसद होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें हमने इस वाइट पेपर की बहस मुबाहिसे में आपके सामने रखी, हुकूमत इन पर न सिर्फ तवज्जो देगी बल्कि मौसर जवाब हुकूमत की जानिब से हमको हमारे उठाए गए मसाइल पे मिलेगा। और आखिर में मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से एक अदबन एक दरख्वास्त करूंगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कहिए कि नए लोग आए हैं, एक मर्तबा हमारे साथ भी बैठकर पुराने शहर के मसाइल के ताल्लुक से जो भी है हम उनके सामने रखेंगे। जो भी उसमें हल हो सका है करिए, जो बाद में होगा, लेकिन मसाइल हैं। और क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, एक 3-4 महीने में गर्मा आ जाएगा, तो गर्मा आते ही ट्रांसफार्मर्स बर्स्ट होते हैं। और रमज़ान भी आएगा, तो रमज़ान और सरमा के लिए एक खुसूसी इजलास को बुला के रमज़ान के महीने में बरखी के इंतजामात के लिए न सिर्फ पुराने शहर बल्कि सारे रियासत तेलंगाना में रमज़ान में मुसलमान रोज़ेदारों को कोई तकलीफ ना हो, मसाजिदों में कोई तकलीफ ना हो, इस पर गौर करें। और एक बात आखिर में कहूँगा, जो मेरे नोट में था मैं बोलना भूल गया, कि आंगनवाड़ीज़ हैं, बहुत सारे आंगनवाड़ीज़ के सेंटर्स हैं, उनके पावर्स को भी कट कर दिया गया है। पहले तो आंगनवाड़ी को पावर नहीं दिया, उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स को पैसे नहीं मिले, लेकिन अब पावर भी काट दिया जा रहा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आंगनवाड़ी के जो सेंटर्स के जो पावर्स भी कट हुए हैं उनको भी आप बहाल कर दीजिए। बहुत सारे स्कूल्स में भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी बहाल करिए। और आपने जो मुझे मौका दिया है, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कोनमनेनी सांबशिवराव।